गुड मॉर्निंग मैम। बोलो, क्या अभी जस्ट सो करके उठा? हाँ बोलो। अनमय, forest chapter today. Forest chapter. I will teach forest chapter. All of you turn out page in which forest chapter have given. Ma'am, page number 222. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. लगाने भी नहीं आ रहा है बेशरम को, उल्टा जुल्टा जैसे पीछे को अरे राम वही को ले लो। अरे आवाज कम चलो। ब्लैक बोर्ड विजिबल है बच्चे? Yes, ma'am. हाँ चलो। Yes, ma'am. फाइव मिनट्स रुको। Only for 5 minutes so that all a student can join with us. Okay, ma'am. Ma'am, I can't able to see the blackboard. What? Yes, Yes, ma'am. ma'am, I can't. Ma'am, we are not able to see the blackboard. Yes, ma'am. You are not able. Just wait. Wait. I'm opening my video. Now? Yes, ma'am. Now. Yes, ma'am. What will you teach? Forest. It is the most valuable things. Most valuable object. Most valuable collection of tree that's supporting us on the earth. Huh? What is forest? If the number of plant more in particular area, that area is known as forest. More number of trees present in particular area, that area is known as forest. So in this chapter, you will study about the forest. What are the components of forest? How the life live in forest. Many lives are present in the forest. So how they are able to live in the forest, and how we categorize the different layer of the forest. Food chain and food web, and importance of forest. First, what is forest? Component of forest, life in the forest, and in this food chain and food web, and a different layer of forest. At the last, important of forest. सब अभी सो के उठा है, अभी तक ज्वाइन कर रहा है। कितने मिनट तक ज्वाइन करोगे तुम लोग? मैम सब बहुत देर से हम 9-10 से कर दिए हैं। तुम लोग का जो ये किए हैं क्लास 9-10 से, ताकि तुम लोग एकदम कंप्लीट रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। पर मैम हम लोग का जो एसएसटी का आपका मैम क्लास 9:50 में खत्म होगा ना? हाँ,
तो मैम एसएसटी वाली मैम का भी उसी समय क्लास है, 9:50 में ही है। Yes, अच्छा, ma'am. तो तो कल उसमें से 9:05 कर देंगे, 9:05 कर देंगे, ठीक है ना? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, Yes, कल ma'am. से 9:05 में स्टार्ट कर देंगे क्लास। यस गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज 9:50 में एकदम हम इंड कर देंगे और कल से 9:05 से ही वो शुरू करेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। चलो, forest, the green lungs of nature that purify the atmosphere. Forests are our lifeline. It is through them that nature shines. है ना? The green lungs of nature. It is lungs, green lungs of nature. मैम आवाज because- क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ? क्लियर आ रहा है मैम, क्लियर आ रहा है। ma'am, आपकी sound clear आ रहा है. काम कर रहा बेटा, मैम। तुम लोग अपना हमको तो इंटरनेट नहीं सही रखोगे ना। हम तो देखो एकदम क्लोज हैं, इससे मोबाइल से एकदम क्लोज होकर के हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में है। यस मैम, योर वॉइस इज कमिंग क्लियरली। हाँ, green lungs of nature that purify the atmosphere. Lungs, and that is green in color, and that purify the air, that give out oxygen and consume carbon dioxide. In this way, it purify our atmosphere. It is absorber of sound. In this way, it remove the atmosphere from the sound pollution. Forests are our lifeline. It is through them that nature shines. Forest is our lifeline. It is lifeline because it gives us the life supporting air, that is the oxygen. Without oxygen, we can't live for few seconds. We require each and every time, each and every second oxygen, and that is given by the forest. So, in this way, forest sign the nature. All living things get advances from the forest. A forest is an area with a high density of tree. The tree which make up the main area of the forest create a special environment. This in turn affect the kind of animals and plants that can exist in forest. Forest is an area with high density of trees. Density means number of tree in per unit area. High density means number of tree in per unit area is known as density. High density means more number of tree in per unit area. So the Ma'am, area please repeat in the which meaning of density. more number of trees are present in any area, that area is known as forest. The trees which make the main area of the forest and create a special environment, and the animal and the plants which are suited with that special environment are present in that forest. That you have studied in one chapter, adaptation. A tropical rainforest having the Yes, ma'am. particular animals. Other rainforests have different animals. Yes ma'am. It is a forest present in the particular area that create a special environment for living the other animals inside it.
human being began life on the forest as forest dweller. You know forest dweller? Yes, ma'am. हाँ क्या है? What is the meaning of Early forest man. dweller? Ma'am, early हाँ? man. Ma'am, early मैम वो man. जो फॉरेस्ट are में living- रहता है. In the forest. They are getting their food in the forest. They are getting their shelter in the forest. Whatever activity is necessary for the human being, they are doing in the forest. So early man begins, human beings began life on the earth as forest dweller. In earlier stage, they were food gatherer and depend on the food for their needs, food, clothing, and shelter. They gather food. Gather means ikatha karna. They gather food from the forest and depend upon the forest for their food, shelter, and clothes. You know how they use the clothes? By the bark of the animals, by the bark of the tree. Animal. Leaf of the tree. They were making their clothes with the bark of tree, very big leaf of tree, or skin of the animals. They gradually become food grower. Now forest dweller become food grower. They know how to grow the food, and they become food grower, and they clear the small patches in the forest to grow their food. However, they continue to depend upon the forest for their every requirements, each and every requirements in daily life. Whatever requirements take place, that are depend upon the forest. Even today, people are depend on the forest for getting paper, timber, fuel wood, medicine, water, and fresh air. The area which is are present surrounding the forest, they having the fresh air. Fresh air means large amount of oxygen. Ma'am, Over what is the year- meaning of fodder? फॉडर मैंने चारा, जानवर को खिलाने वाला जो होता है ना चारा, उसको कहते हैं फॉडर कहते हैं. जो जानवर एनिमल नहीं खाता है, ये एनिमल जो Ma'am, है cow. काऊ, बफेलो, ये मैम, सब जो भूसा खाता को है fodder बोलते उसको हैं. फॉडर कहते हैं. चारा, कुट्टी जो कटिंग करके ना फॉरेस्ट से ला करके स्मॉल पीस में करके और उसको देते हैं, वो फॉडर. फॉडर मैंने चारा, उसको एनिमल को जो खाने का आइटम होता है उसको फॉडर कहते हैं. क्लियर? भूसा, घास, ये सब पता है? Yes, ma'am. Yes, भूसा पता है? भूसा, Yes, ma'am. तो हाँ, तो Yes, भूसा ma'am. पता है तो वो फॉडर है. गांव में रहता है. हाँ, गांव में रहता है, बिल्कुल. और ये शहर धान में जो भी रहता निकलने है. के बाद, धान जो जिससे चावल निकलने के बाद जो उसका रेस्ट पोर्शन जो बच जाता है, प्लांट का जो रेस्ट पोर्शन है, वो भी फॉडर है. उसको भी Yes, ma'am. काऊ को, बफेलो को, किसी भी एनिमल्स को देते हैं और एनिमल उसको करता है, खाता है. मैम मशीन से काट के छोटे छोटे पीस में करके देते हैं. हाँ, मशीन से काटते हैं और मशीन से काट करके और उसको छोटे छोटे पीस में करते हैं. वेरी गुड, वाह, तुमको पता है, गांव में देखो तो. हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, एकदम तुमको पता है. अब चलो, ओवर द ईयर द एरिया अंडर द फॉरेस्ट covered has declared steadily. This is because the forest has been cleared for agriculture, industry, housing, and many other development activities. हाउसिंग के लिए, रोड के लिए, मेडिसिन के लिए, for getting timber, furniture, we have declared the forest. फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया है ना हम लोगों ने. अब देखो, ये
जिस एरिया में हम लोग का स्कूल है, पहले वहां बहुत सारा क्या कहें, फॉरेस्ट तो नहीं था, लेकिन वो था, ऑर्चर्ड था, मैंगो का, आम का बगीचा Yes, था। ma'am. लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और यहाँ जो कॉलोनी एस्टेब्लिश कर सके, तो उसके लिए लेखानगर कॉलोनी है ना हम लोग के स्कूल के जस्ट पीछे, हाँ, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट यस हो मैम, यस सके, रहता है वहीं। हाँ, तो उसके लिए जो है वो जो मैंगो ट्री जो है कट कर दिया गया। बहुत सारे मैंगो ट्री थे जो कि काट दिए मैम गए। रोड्स के बॉर्डर पे लगे हुए थे। हाँ, और रोड पर मैम- जस्ट हम लोग के स्कूल गेट के सामने ये था, Yes, टैमरिंड ma'am. ट्री था, बहुत सारा टैमरिंड ट्री था। लेकिन जब रोड सरफेसिंग हुआ बेटा, तो उसको कट कर दिया गया, और रोड का भी जरूरत हो गया, कॉलोनी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया, स्कूल आ गया, पॉपुलेशन हाई हो गया, तो अब नीड्स होगा किसका, रोड का। तो रोड भी जरूरत था, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए जितना जो प्लांट था उसका कटिंग कर दिया गया, रोड साइड में जो ट्री थे उसका कटिंग कर दिया गया। उसी तरह से जब मान लो कि कोई रोड जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उस रोड का जो मैपिंग है वो फॉरेस्ट से होकर के गुजर रहा है, तो फॉरेस्ट से होकर के गुजर रहा है, तो उस रोड को बनाने के लिए वो फॉरेस्ट का उस पार्टिकुलर एरिया को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, उसको काट देना पड़ेगा। और यही किया गया, उसको जो है डिक्लेयर किया गया, काट दिया गया, और रोड तो बना, इंडस्ट्री तो एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन नंबर ऑफ क्या हो गया, ट्रीज आर लेस। These are creating the global warming, है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, because the forest is temperature maintainer. It is not maintain only the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. It also maintain the temperature, है ना, it brings the मैम वो cloud to इकोलॉजिकल basket, बैलेंस रखता है। bring the raining. Do you know the largest area of rainforest in South Africa? It is called Amazon rainforest. It is the biggest Yes, rainforest. ma'am. है ना, Yes, Amazon, ma'am. near about the Amazon river, Amazon नदी के किनारे जो Ma'am, it forest is है, the biggest forest. हेलो। हाँ, वो biggest That is forest lungs है, of the Amazon earth. rainforest. Ma'am, it is the lungs of the earth. हाँ, long, Ma'am, it contains 20% oxygen of Ma'am, the world. lungs, ma'am, lungs है धरती का. हाँ, lungs of earth, हाँ, it is lungs of earth, हाँ. Over 3,000 kind of tree grow in this rainforest. Many kind of flower also grow here. The Amazon rainforest is very important for all of us. Some people call Amazon rainforest the lungs of the world. The very many trees and other plants here give off lots and lots of oxygen. People and animal all need oxygen to breathe. The Amazon rainforest breathe out more than 20% of the world's oxygen supply. अब suppose that कि more than 20% oxygen supply. So it is the lung, that's why it is the lungs of the earth, na? Huh? Now, component of the forest. Yes, ma'am. Component of forest. Component of forest. So, as like the environment having two components now. Yes, ma'am. Environment having two components. Same Yes, way. ma'am. Yes, ma'am. Physical and same way. Living- Forest having living- two components. Biological Ma'am, biotic and abiotic. Biotic and abiotic. Biotic and abiotic. and abiotic component. Abiotic component.
biotic components means bio means living. Bio means what? Living. Living. Ma'am, living things. Bio Like animal, means plants. living. Living element of the forest make biotic components. Living elements of the forest make the biotic component, whereas non-living element makes the abiotic component. What will be the living component? So living component include trees, shrub, vines, grasses, and other herbaceous non-woody plants, mosses, algae, fungi, insect, mammal, birds, reptile, and amphibian, and many other microorganisms. है ना? All these items, trees, herbs, various herbs what? Various small plants, birds, reptiles, amphibians. Amphibians क्या? बोलो. Frog. Ma'am, frog. Ma'am, snake. Ma'am, crocodile. Crocodile. Which can live in both water Ma'am, and both water and land. land. That is known as amphibian. Mammals which have mammary gland. That animals which feed their child. Mammals, reptiles, lizard, crocodile. These are come in the category of reptiles. Many microorganisms lives in the forest. And other big animals, है ना? Mammals में other big animals, a tiger, jackal, lion, panther, leopard, है ना? These are the mammals live in the forest. And these comprise the biotic component. है ना? Biotic component. And next component that is comprised of non-living component, abiotic component. It is comprised of element non-living like the soil, water, mineral, light. है ना? Soil, water, mineral, and light. Light is also present. है ना? These are the component of abiotic. These are the element of abiotic component. Of life in forest. How the life exists in forest? So life in the forest categorized in the autotrophs, heterotrophs, and saprotrophs, as like in the general environment. And in general environment, all of you have study about the consumer or autotrophs. Ma'am, producer. Consumer, that is the heterotrophs. Producer, plant, that is the autotrophs. Autotrophs. And saprophytes. Saprotrophs. Same way, a forest having the three categories of the animals or plants. Autotrophs, the plant, all green plants that are present in the forest make the autotrophs, and the animals which feed on the forest, which depend upon the forest, are heterotrophs, and saprotrophs, the plants which grow on the dead and decaying plants and animals like mushroom, fungi, and mushroom like Alga, ma'am. Algae, fungi, algae having capacity to make their own food, fungi. These are saprotrophs. All animals, whether herbivorous, carnivorous, omnivorous, ultimately depend upon the food for their survival.
है ना? All the animals depend upon the forest for their food, directly, either directly or indirectly. अब directly, how directly? Hares that eat the grass, that depend upon the forest directly, है ना? ये cow, buffalo मैम गोट living in ये the सब forest that depend upon the plant directly, and lion depend upon मैम इनडायरेक्टली Ma'am, indirectly. because the lion eat the place of other animals. गोट को मार के खा जाता है, बफेलो अकेले में मिले उसको भी खा जाएगा, तो ये अदर एनिमल्स पर वो डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। लेपर्ड कैसे डिपेंड करता है? प्लांट खाता है? कोई No, बताओ? ma'am, indirectly वो भी dependent है। हाँ, ये बहुत चालाक होता है, ये भी प्लेस खाता है ना? लेपर्ड ऑल्सो ईट द प्लेस ऑफ अदर एनिमल्स। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल इनडायरेक्ट। Survival, ma'am. हाँ, आशीष हैंड रेज किया है, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ Ma'am, what is the meaning of electrical plant? Electric plant. Hydroelectric plant, the plant which are present in water and able to produce electricity. Hydroelectric plant. तो Yes, ma'am. अरे वो तो प्लांट नहीं है आशीष, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वो प्लांट जो है ना एस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। मशीन उसमें रहता है, वो प्लांट नहीं है। आशीष इसमें Yes, कहाँ है वो? इस चैप्टर में है? Yes, ma'am, कहीं है और से ऊपर पूछो। में। मैम मैम करेंट इसमें में ही है मैम। मैम कहाँ मैम है? ऊपर वाले मैम मैम 223 ऊपर वाले पैराग्राफ के सेकंड लाइन में नंबर 223। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये हाँ, among ठीक others है। लिखा हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। माने ये पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, पेड़ और वो ट्री नहीं बैटरी है। टाइप का हुआ ना। हाँ इसमें एक जगह फैक्ट्री जैसा बना हुआ है, फैक्ट्री ही है, और जिसमें कि मशीन है, और वो मशीन जो है वो क्या करता है कि वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना? इसमें ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या है कि ये मशीन है, ये जगह है जहाँ की बहुत सारे मशीन को रखते हैं और वो मशीन का यूज करते हैं वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे मशीन वाले जगह को जहां मशीन ऐसा एस्टेब्लिश किया गया है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। जैसे उसमें क्या होता है ना, मालूम है? उसमें व्हील, बड़ा सा व्हील होता है आशीष, और बड़े से व्हील में ऐसा बड़ा सा गोल व्हील होता है। ब्लैक बोर्ड पर देखो बेटा, ब्लैक बोर्ड पर देखो, ये बड़ा सा व्हील होता है और व्हील में क्या बना होता है? वो ये और इससे क्या टरबाइन वाटर का फ्लो इस पर डालते हैं, तो इससे ये व्हील है मूव करता है। तो और इसके मूवमेंट को एक मशीन से जोड़ देते हैं, उस मशीन का नाम है क्रेन शाफ्ट। क्रेन शाफ्ट वो जो है इस मशीन के मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। क्लियर? यस मैम। मैम, यस मैम। हाँ हम क्लियर हो गया। अब देखो लाइफ इन फॉरेस्ट, तो ऑल एनिमल्स
present in the forest can be categorized in herbivorous, carnivorous, or omnivorous. Ultimately, they are depend on the forest for their food requirements. The herbivorous consume plants and are in turn eaten by the carnivorous. Such a sequence of who eat whom make up food chain. है ना? One animals get eaten by other animals, and this makes the food chain. Like in the photo, in the your book have given grass eaten by rabbit and rabbit eaten by snake. This make the food chain. Grass eaten by grasshopper. Grass eaten by grasshopper. Or grass eaten by insect. Insect. Insect eaten by frog. And frog eaten by lizard. It makes the food chain. And many food chains are interlinked in the nature, and this makes the food web. It is food chain. Food chain. Grass eaten by insect, insect eaten by frog, and frog eaten by lizard. Insect, frog is in the next. Frog eaten by snake. So this makes the food web. Web. Grass. Grasshopper. Grasshopper. And grasshopper eaten by snake. And snake eaten by hawk. Ma'am, owl. हाँ, और owl भी. So you can see कि one food chain interconnected with the other food chain. This is known as food web. क्या इसका नाम देते हैं? Food web. When food chain, many food chains interlinked with each other, it makes the food web. Clear? Clear? और बताओ, तुम लोग बताओ फूड चेन और फूड, दो तीन फूड चेन बताओ. चल बुक में है, उसी को देख करके बताओ. पेज नंबर 224. 224. चलो सिद्धि बताओ फूड चेन. Lion. Just wait. Name will be called. Rabbit eaten by a lion. Lion eats rabbit. Lion eats snake. Hawk eats snake. Grass eaten by rabbit. Rabbit eaten by lion. हाँ ठीक है. Ma'am, Rabbit fungi. eaten by lion. Fungi eaten by Ma'am, नहीं खाता. Ma'am, the independence of plant and animal on each other could form a food chain. हाँ. Ma'am, grass और eaten बताओ, by rabbit, और rabbit ये eaten by name- snake. Serve eaten by deer and deer eaten by lion. हाँ. Ma'am, grass और बताओ, eaten अरुण by का बताओ. grasshopper and grasshopper eaten by shrew and shrew eaten by hawk. हाँ. हाँ. Grasshopper eaten by shrew and shrew eaten by Shrew hawk. मतलब और rat बताओ. ना मैम. Ma'am, grass eaten by rabbit, Ma'am, rabbit squirrel eaten मतलब by गिलहरी होता है tiger. ना.
हाँ, और बताओ। Ma'am, fungi eaten by squirrel, squirrel eaten by hawk. Eaten by rabbit and rabbit eaten by snake. Fungi eaten by squirrel, squirrel eaten by hawk. हाँ, वेरी गुड। मैम अब ग्रास ये फंगी में देखो, ये फंगी में क्या है? मशरूम। grasshopper eaten by screw, snake eaten by screw, and lion eaten by snake. हाँ, वेरी गुड। Herb eaten snake. by rabbit and rabbit eaten by rabbit, rabbit eaten by snake eaten by hawk. fungi eaten by हाँ, वेरी गुड। तुम लोग फूड चेन बनाना और उसको इंक्लूड करना, फूड चेन बना करके और फूड वेब का फॉर्मेशन करना। कर सकते हो? कॉपी में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Copy में। yes केवल नेम लिखना। मैम करके कल आपको दिखाएंगे। और मैम, मैम yes, आपको ma'am. मनीषा Copy मैम का में। नंबर चाहिए था ना मैम? सगुना वाली मनीषा मैम का आपको नंबर चाहिए था ना? हाँ, तो तुम मेरे नंबर पर सेंड कर देना ना। यस मैम, जब हम लोग का यस मैम, आपको मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ, मेरे नंबर पर सेंड कर देना। आपके पास मेरा नंबर है। और सुनो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाने के बाद तो हमको जो है ना, इसी से क्या कहलाता है, इसी नंबर से तुम लोग तुरंत इसके बाद तो एसएसटी का क्लास होगा। मैम मेरे और पास बाद WhatsApp नहीं है। में शाम में पूछ सकते हो 7:30 के बाद, लेकिन अर्जेंट हो तब, या फिर ये मैसेज करोगे और उस पे हम लिख देंगे। जैसे कल कोई मेरे मैसेज पास किया आपका था, नंबर नहीं है। मैसेज कोई कल किया था, उसको हम आंसर लिख करके दिए। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी बोलो ना। मैम आज का होमवर्क क्या है? फूड चेन बनाना है, 10 फूड चेन लिखो सभी। मेक 10 कॉपी में बनाना है। कॉपी में। हाँ, कॉपी में, फाइनल कॉपी में बनाना है। अपूर्वा लिखो। हाँ, फूड चेन मैम। लिखना है। मैम फूड वेब्स क्या होता है? अरे एक चेन दूसरे चेन से इंटरलिंक है ना, तो वो फूड वेब बना दिया। जैसे देखो, सुनो, ये जो है ग्रास, बुक में देखो 224 पेज। हम देख रहे हैं। ग्रास जो है eaten by rabbit and rabbit eaten by snake and snake eaten by hog. फिर अगेन grass eaten by grasshopper and grasshopper eaten by shrew and shrew eaten by snake and snake eaten by hog. तो दो फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हुआ ना। यस मैम। तो ऐसा ही मेनी फूड चेन जो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो उसको क्या नाम देते हैं? फूड वेब। मैम यस मैम, समझ गए। मैम श्रीयू का मीनिंग क्या होता है? नेवला। मूल चूहा है, जंगली चूहा। श्रीयू जो है नेवला ना। चूहा के जैसा, चूहा नहीं एक्चुअली, वो श्रीयू जो है रैट के तरह ही एक एनिमल है, रैट लाइक एनिमल, रैट के जैसा दिखने वाला चूहा, श्रीयू उसका नाम है। स्क्वायर आज सर्च